Namaskar, my dear countrymen. The entire world is passing through a grave situation. Generally, whenever there is a natural crisis, it is limited to a few countries or states. But this crisis has engulfed the entire human race. Even during the First and the Second World Wars, the number of countries affected were not as many as the number affected by the coronavirus. कोरोना की इस बीमारी से है। पिछले 2 महीने से For the last 2 months, निरंतर we have been watching with concern दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें, the news about coronavirus spreading across the इन 2 world. महीनों में भारत के 130 In these 2 months, 130 crore Indians have resolutely कोरोना confronted जैसी वैश्विक the महामारी corona pandemic डटकर मुकाबला and taken the necessary precautions. सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है, लेकिन But बीते कुछ दिनों in the last few days, a feeling has crept in ऐसा माहौल बन that रहा we है, ऐसा लग रहा are safe and everything is okay. है संकट से बचे हुए हैं, ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी But this complacency कोरोना से in the face of this global pandemic ये सोच is not correct. सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना, Therefore, it is very essential that every Indian is alert and aware. आपसे Friends, मैंने जब भी जो भी Whenever मांगा है, I have asked something from you, you मुझे have never disappointed कभी me. भी देशवासियों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है It is the power of your blessings कि हम सब that our मिल efforts करके are successful. अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। आज मैं आप सभी देशवासियों से Today, I am here to ask for something from my countrymen. आप सबसे कुछ मांगने आया। मुझे आपके आने वाले कुछ सप्ताह I need your coming few weeks and also your time. आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तक My dear friends, विज्ञान till now, कोरोना महामारी the से science बचने के लिए has not been able to find कोई निश्चित a proper remedy सुझा सका है to save us और from the न corona ही pandemic, कोई and no vaccine बन पाई। has been made for it. ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी In this situation, it's quite natural that our worries दुनिया are के जिन increasing. देशों में कोरोना का In the वायरस countries where the menace of the coronavirus is more, a new fact has emerged from studies. वहां अध्ययन में एक और बात सामने आई है। इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के In these countries, after the initial phase, there has been का जैसे a sudden spurt in infection. इन देशों में
कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या In these countries, the number of people infected with corona rapidly increased भारत suddenly. सरकार इस स्थिति पर इस वैश्विक The government of India महामारी के is keeping a close vigil on the track record of the spread of coronavirus. हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं There are some countries which took immediate decisions and contained the number of infections निर्णय भी किए by isolating और अपने people. यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके स्थिति को संभाला है और उसमें नागरिकों की भूमिका बहुत अहम रही। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने For a developing country like India, with 130 crore population, विकास के लिए the growing challenge of coronavirus is not a normal situation. और हम जैसे देश पर कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े-बड़े और विकसित देशों में हम इस Today, वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव When we are witnessing extensive impact of corona pandemic in developed countries, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा it will be wrong to assume that it will have no impact on India. इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए Therefore, there is a need दो प्रमुख to बातों follow की two important things to fight this pandemic. संकल्प The first is resolve, दूसरा and the second, restraint. संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को Today, our 130 crore countrymen have to और show दृढ़ resolve करना होगा and determination कि हम to fight this pandemic. इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते As a citizen, by performing duties and following the directions of the central and state government. केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। आज Today, हमें we have to take a resolve that we shall protect ourselves from getting infected. संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक And will also save others from getting infected. एक ही मंत्र काम करता है। हम स्वस्थ During such a pandemic, only one mantra works. World is healthy तो जगत when we are healthy. ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा In such a situation, when there is no medicine हमारा for खुद this का disease, स्वस्थ बने रहना it's very essential for us आवश्यकता है। to remain healthy. इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने Restraint रहने के लिए is compulsory to protect ourselves अनिवार्यता and remain healthy. वो है संयम। And what is the best way to maintain restraint? Avoid crowds and stay at home. घर से बाहर निकलने से बचना, Today, what is known as social distancing is very necessary in the present phase of corona pandemic. कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत Our resolve भूमिका निभाने वाला है and restraint और इसलिए is going to play a vital role in reducing the effect of this pandemic. आपको कुछ नहीं होगा, And therefore, if you feel ऐसे ही that you are okay and nothing is going to happen to you और कोरोना से बचे रहेंगे। and you will be मैं समझता
keeping roaming in the markets, on the streets, ऐसा करके and will be safe from corona, it is not the right approach. अपने By doing this, you will be doing injustice to yourself and to your family. मेरा सभी देशवासियों से Therefore, this is my request to my countrymen, that कि आने for the वाले coming weeks, सप्ताह तक they should जब बहुत go out of their homes only तभी अपने घर से बाहर if it is essential. Only if it जितना is essential. संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें. As much as possible, you should do your work from home, whether related to business or the office. Those who are in the government services, hospitals, people's representatives, media persons, सक्रियता तो आवश्यक है, it is necessary for them to be active. समाज के बाकी सभी लोगों को But the remaining numbers, members of society, they should isolate themselves. बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए. मेरा एक और आग्रह है कि हम I have another request, that the senior citizens, सीनियर सिटीजन्स को 60 to 65 years of age and above in our families, should stay at home for the coming few weeks. घर से बाहर न निकलें. मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें. हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं है. Today's generation will not be very familiar with this, छोटा था but in olden times, वो करते थे. in a warlike situation, युद्ध की स्थिति होती थी there used to be blackout तो at गांव nights. ब्लैकआउट किया जाता था. शीशे पर भी कागज लगा दिया जाता था, बंद लाइट बंद रखी जाती थी, लोग रात भर चौकी करते थे. और Sometimes युद्ध न हो तो भी साल में 1-2 बार तो वहां के जो नगर पालिकाएं होती थी वो जागरूक हो करके ये ब्लैकआउट का ड्रिल भी करवाती थी. Sometimes this continued for a long time. और इसलिए मैं आज Several times there used to be a drill for the blackouts. एक और समर्थन मांग रहा हूं. Today, I am also asking for another support from each जनता countryman. कर्फ्यू. जनता This is कर्फ्यू यानी Janata Curfew. जनता के लिए Janata Curfew means curfew for the public and by the public. इस रविवार यानी This Sunday, that is the 22nd of March, from 7 a.m. to 9 p.m., all countrymen have to follow Janata Curfew. सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है. इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई During भी this period, neither we will come out of our homes, nor on the streets, nor anywhere in the vicinity. हो, अपने घरों में ही रहे. हाँ, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा. Only people related to essential services will come out of their homes on the 22nd लेकिन एक of नागरिक March. के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए. साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, Friends, हमारे आत्मसंयम, on the 22nd of March, this effort of ours will be a symbol of our self-restraint and a resolve of our duties in national interest. को जनता कर्फ्यू की सफलता
success of Janata Curfew on the 22nd of March, its experience will prepare us for the future challenges. मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा I will also request to the state governments to lead the observance of Janata Curfew. करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, I will also request the youth associated to NCC, NSS, कई प्रकार के संगठन, every young man of the country, civil society, all kinds of associations to make people aware for the next 2 days on Janata Curfew. रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन 10 नए लोगों को फोन करके If possible, everyone should call at least 10 people every day to make them aware about coronavirus and Janata Curfew. उनको समझाएं, उनको बताएं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, Friends, भारत के लिए in a way, this Janata Curfew will be like a testing time for India. ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत This is also the time to see how prepared is India to fight the menace of a pandemic like corona. आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन Amidst your efforts, on the 22nd of March, the day of Janata Curfew, I am asking for your another cooperation. सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग Since last 2 months, millions of people are working day and night in hospitals and airports. दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, Be it people in the field of doctors, nurses, hospital staff, housekeeping staff, airlines staff, government servants, police personnel, media persons, railways, रेलवे, bus, auto rickshaw, home delivery people, they are serving others ये लोग अपनी by परवाह न not taking care of themselves. दूसरों की सेवा में लगे हुए। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। आज खुद भी If you look at the present situation, इनके संक्रमित it cannot be called a normal one. Today, they themselves are in the danger of getting infected. अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। हर किसी की सेवा In spite of this, they are doing their duties, serving others. अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। They are standing between corona and the countrymen like protectors of the nation. संगठनों का कृतज्ञ है The country is obliged to them. कि 22 मार्च रविवार के दिन On the 22nd of March, I want all of you to thank all these people. और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक-एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे Sharp at 5 p.m. on the 22nd of March, we should stand on our doorways, balconies, in front of our windows and keep clapping hands and plates, को शाम को 5 बजे ringing the bells for 5 minutes to salute ऐसे लोगों का and encourage them. आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके,
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है। I also request to the local administration of the entire country that at 5 p.m. on the 22nd of March, they should blow siren to inform people. सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले, For our countrymen who believe in service above self, हमें पूरी श्रद्धा will have to express our feelings अपने with full gratitude. भाव व्यक्त करने चाहिए। साथियों, संकट के इस समय में Friends, आपको ये भी ध्यान रखना है, we should also keep in mind that this time of crisis, the pressure is continuously increasing on our essential services and hospitals. ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को इस महामारी के लिए प्राथमिकता देने की सुविधा बने। और इसलिए Therefore, I request you all to avoid going to hospitals for a routine checkup. अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो, उससे बचना चाहिए। जितना बच सके बचना चाहिए। आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाले डॉक्टर, आपके फैमिली, So if you find it very necessary, then take advice on phone from any doctor you know, or your family doctor, or any doctor in your relation. अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी, If you have taken an appointment for elective surgery, my request is to postpone it for a month if it is not an emergency. कि इसे भी आगे बढ़वा दें, एक महीना बाद की तारीख ले दें। साथियों, इस वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था This pandemic has also severely affected the economy. कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए Keeping in mind the economic challenges posed by the corona pandemic, it has been decided फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में to create a COVID-19 economic response task force headed by the finance minister. इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से This task force will be in constant contact with all the stakeholders, take their feedback, and after analyzing the situation, निकट भविष्य में फैसले लेगी। take necessary decisions in the near future. ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक The task force will also ensure that all the decisions taken to tide over the economic crisis are effectively implemented. निश्चित तौर पर ये महामारी ने देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम, This pandemic has greatly impacted the economic well-being of the middle, lower middle, and poor sections of society. संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, In this time of crisis, I appeal to the business community and the high-income sections of society to be sensitive towards उनके आर्थिक the economic interests of all those whose services you take. आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, It is possible that in coming few days, these people may not be able to attend office पूरी मानवीयता के साथ, or to come to your homes. In this situation, please do not cut their wages. हमेशा याद Decide humanely and sensitively. अपना परिवार चलाना है। Always remember, they also have families to feed and protect from disease. मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी I also assure countrymen करता हूं, that all steps are being taken to ensure दूध, that there is no scarcity of essential commodities दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक such as milk,
food items, कमी ना हो, medicine. इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि I appeal to countrymen not to go into panic buying to store essential commodities. आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। Do normal buying, Panic not buying panic buying. ये कतई ठीक नहीं है, उसको न करें। साथियों, पिछले 2 महीनों में 130 करोड़ भारतीयों ने In the past 2 months, 130 crore Indians, every citizen has taken this crisis उस संकट को देशवासियों ने अपना as their own and have contributed for India and society with all their ability. देशवासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी I am confident that in coming days also you will continue to perform your duties and responsibility in the same manner. इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसे समय में I know that in these times some difficulties do arise. Atmosphere of apprehension and rumors also एक नागरिक develop. के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी Many a time पूरी नहीं हो पाई। our expectations as citizens also remain unfulfilled. बड़ा है और वैश्विक है। Still, this crisis is so grave that despite these difficulties, we must face this crisis with firm determination. इन दिक्कतों के बीच दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिनाइयों का मुकाबला करने की भी आवश्यकता है। साथियों, हमें अभी अपना सारा सामर्थ्य Friends, right now, we have to focus all our energies towards protecting ourselves from corona. आज देश में Today, be it the central government, राज्य सरकार state governments, local bodies, panchayats, people's representatives, निधि हो या everyone is contributing हर कोई towards fighting this global pandemic in their own way. महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है। आपको भी अपना पूरा योगदान You too देना have to give your full contribution. आवश्यक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावरण It is essential that in the fight against this global pandemic, the human race emerges victorious. India emerges प्यारे देशवासियों, victorious. कुछ दिन में नवरात्रि का पर्व In आ a few रहा है। days, the festival of Navratri will come. ये शक्ति उपासना का पर्व है। भारत It is the festival of worship of Shakti. आगे बढ़े, इस India संकल्प marches को ahead लेकर के with all its might. आवश्यक संयम का पालन करते हुए This is my wish. हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्फ्यू के लिए, मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Many, many thanks.